And second is, we will discuss something about the practical application, what we can try to do. So you can repeat this after me. So we will just go through the verses which we have seen yesterday. Shaunakvacha Attva Swarikta Spradatatayino Yudhishthiro Dharmavratam Varishta Sahanujay Pratyavarudha Bhojana Pravratta Kimakari Shitata. So what I told in this verse, yes, Parmeshwar Chitru. Any point from this verse? Atatai. Who is Atatai? So what is this question? Shaunak Muni is asking us. Shaunak Muni is asking that Yudhishthir Maharaj and all the Pandavas who were so virtuous and away from sense gratification and so much misdeed has been done towards them, and after all this, such kind of personalities, when they got kingdoms, so how they are ruling it, so they want to know it. Yeah, so the question in the first verse is how Yudhishthir Maharaj ruled, Katham Pravritta, because Yudhishthir Maharaj is Dharma Vratam Varishta, one who is following Dharma, like that. So the behavior of a great person is an Apane Acharya Prabhu Sabarishya, is an example for others. That's what like Acharyas, Srila Prabhupada has been Acharya. So that is why he wanted to know how he engaged in ruling the kingdom. Vansham kurur vanshadavagni nirhatam. Second verse. Samrohayitva bhavabhavano hari. Niveshitva nijraja ishvaro. Yudhishtiram pritamana bhavuvaha. Yes, so what was the main thing in this verse? Yes. Satyavakashru. In this, Muni said that how he Yudhishthir and then ruled after the departure. नहीं Satyavakashru. जगा रहा हूँ आप लोगों को. Yes, Anand Prabhu, what was that? Ajay Prabhu? So in the second verse he is talking about Parmeshwar Chitru. He is talking about Vansham Kururvansh Dava Nirritam. Like when the bamboos they rub each other, there is a forest fire. Similarly, the Kuru dynasty got destroyed like that. So there is a plan of Lord behind it. And the same Lord, Samrohayitva, he protected Parikshit Maharaj, the last person in that dynasty. Like that. Niveshitva Nijraja Ishwar, when he entrusted the kingdom to Yudhishthir Maharaj, because it was his desire. Third verse. Nishamya Bhishmo Athachyutoktam Pravrta Vijnana Vidhuta Vibrama Shashashakamin Revajitashaya Paridupanantamanujanu Vartita. Okay, so what is told in this verse? Who knows? Who remembers? So this was Nishamya means he heard from Bhishma. How Yudhishthir Maharaj agreed to rule, he heard from Bhishma and Krishna. So in this verse I spoke about hearing.
what is the importance of hearing. But you have not heard much. Pravarta Vigyan. And when he heard from Bhishma and Krishna, then Vigyan. What is the meaning of Vigyan in this? Vishesh Gyan. Yeah, what is that Vishesh Gyan? What is the Vishesh Gyan he got? Krishna is the proprietor. That Krishna is the controller. He realized that Krishna is the controller, so it all belongs to Krishna, I am caretaker. So he ruled the whole planet. And how the king should rule? Ajit Ashraya. We should take shelter of Krishna. Under Krishna's shelter, one should rule. How far his kingdom was spread? Paridhi, Upanantam. Whole earth he was ruling. Then, from 4th verse it is explained how the nature reciprocated. When the king is following Krishna and he is following Dharma, how the nature reciprocates. Kamam vavarshi parjanya. Kamam vavarshi parjanya. Sarva kama dugamahi. Sarva kama dugamahi. Sisichu samprajan gava. Sisichu samprajan gava. Vaisodha swatirmuda. Vaisodha swatirmuda. What this verse is talking about? वर्षा profusely होती है. Showers the rain and then this earth grows the Grains. crops. Yeah, the cloud anyway shower rain, but what is being specially told here? At that time, for the specific time, proper rain was. Yeah, right time and right amount, Right. right quantity of rain. Timely rains in Yudhishthira Maharaj's kingdom. Sarva Kama Dugamahi. Earth was fulfilling all the needs of everyone. No one was dissatisfied. The cow's milk bag was so full. The earth was moistened by the milk. 5th verse. Nadya samudra giraya. Nadya samudra giraya. Savanaspati virudha. Savanaspati virudha. Palande oshadaya sarva. Palande oshadaya sarva. Kamam manvatutasya ve. Kamam manvatutasya ve. Similarly, the rivers, the oceans, the mountains, they were giving everything. The minerals, the gems, they were being left on the shore. All the activity, everything was available for the people to be happy. And now they are about their mental and physical status. The 6th verse. Nadayo vyadaya klesha. Nadayo vyadaya klesha. Deva bhutatma hetava. Deva bhutatma hetava. Ajata shatrava abhavan. Ajata shatrava abhavan. Jantunam ragi karhechit. Jantunam ragi karhechit. What is the meaning of Adi? Raise hand, don't. What is the meaning of Adi? How many of you remember? Yes, Ajay Bro? Food, bhojan. Okay. Adi means mental issues, which are very much in Kali Yuga. Definitely. Mind is disturbed. And what is the meaning of Vyadi? Disease. Body. Physical issues. Deva bhutatma hetava. What are the 3 kind of kleshas? आदि भौतिक आदि दैविक आदि आदि. कोरस में अच्छा है, पता नहीं चलता है वो इससे आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक. So like that, in the Yudhishthira Maharaj kingdom, nobody has any mental issue. Not even issue, the mind was satisfied. What is told about austerity of mind in the 15th chapter. Mana prasadam saumitvam. The first austerity of mind has to be satisfied. Nobody was hankering for something. There was no lamentation, no hankering for anything material. Like that. So such was Yudhishthira Maharaj's kingdom. He himself was Ajat Shatru. Ajat Shatru means जिसके शत्रु ने जन्म नहीं लिया. तो युधिष्ठिर महाराज किसी को शत्रु कंसिडर ही नहीं करते थे.
दुर्योधन को भी कंसिडर नहीं करते थे शत्रु. दुर्योधन कंसिडर करता था, वो शत्रु नहीं कंसिडर करते थे किसी को. युधिष्ठिर महाराज का स्वभाव था. तो ऐसा उनके किंगडम का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है. Then seventh verse talks about now Krishna is leaving. Ushitva Hastinapure Masam Katipayanari Suhradam Chavishokaya Svasuscha Priyakamaya. So why Krishna stayed back for few months in Hastinapur? Kunti Maharani, huh? Subhadra. Who believes his sister Subhadra? Okay. So for the Suhradam cha Vishokaya, because all the devotees were in Shok, Vishesh Shok. They were in so much lamentation, all the devotees. And also specifically his sister Subhadra name is mentioned. Because everybody has lost someone very dear. So to please them, to pacify them, Krishna stayed back. Amandraja vinagyata Parishajya vivadyatam Aruroharatham Kashit Parishvakto vivadita. This verse is talking about how Krishna was dealing. So Yudhishthira Maharaj, he paid obeisances. Bhima and Arjuna he embraced. And Nakul and Sahadev received obeisances. Like that. So Krishna was dealing just like an ordinary person. So topmost person is dealing like an ordinary person. Like that. There is the nature of Krishna's heart. His intimate relationship with his devotees. So while explaining this, I gave one example. Whose example I gave in this? Someone remembers? One that example, Krishna Chandru. Dancing with his driver. So Krishna Chandru was dancing with his driver. Radhanath Maharaj said, I am sure now the project of Chapati will flourish. Because one person has kept aside his false ego and is willing to embrace the principles given by Lord Chaitanya. What other example I gave? But I have to see what you are writing in the diaries. It seems nothing is matching. One question asked to Maharaj that who is spiritual? Are you spiritual master? Then Maharaj replied, I will. If you want me to serve as a spiritual master, then I will serve. Yeah. So consciousness of servant, yes. Maharaj told whatever way I am a servant, whatever way you wish to, that way I try to serve. One reporter asked Prabhupada, Prabhupada told there are 4 classes. So what he asked that Swamiji, which class do you belongs to? But I am servant of the class. Yes. So when Prabhupada was asked, Prabhupada told I am servant of all classes. 9th and 10th. So now in the 8th verse it says Krishna is about to board the chariot. So in the 9th and 10th verse talks about the separation now. Subhadra Draupadi Kunti Virat Tanaya Tatha Gandhari Dhatarashtascha Yatsur Vatamo Yamo Prakodarasya Dhamyasya Striyamatsa Sutadaya Nase Hire Vimuyanto Virham Sharang Dhanvana. Yeah. So now you can remove the screen. So this verse which I have been speaking, this verse speaks about how they were feeling the separation. All the Hastinapur Vasis, and the names are mentioned. Some names are mentioned. There are many more whose names are not mentioned. Like that.
And so much suffering they were experiencing that much suffering they did not experience when their own relatives died. Somebody's son died, somebody's husband died. And this kind of situation is very difficult to imagine also in the material world like that. Because the closest relationship people have in this world is with their relatives. If someone's son died, so how much pain he feels. Like that. But here it is told that Na sehire vimuyante. They could not tolerate. They could tolerate the death of their son, somebody's husband, somebody's relative. They could not tolerate the death of. They could not tolerate the separation of Krishna. Like that. Why? Because Krishna is the dearmost object of affection of every living entity. Krishna is the dearmost object of affection for every living entity. So the goal of human form of life is to revive our relationship with Krishna. So that lost relationship, we have lost that relationship. And because of that we have come here. And while coming here we have so much suffering. That way. So much suffering. Every day there are so many challenges. And the first installment of suffering is this material body. The moment Jiva comes, the soul with its Satchidanand. So soul means it's eternal. Soul has no fear of future. Nothing can kill the soul. And Chit means soul is full of knowledge. Now we have tough time remembering what we discussed yesterday. The soul is full of knowledge. And Anand, soul is always blissful. That Satchidanand soul has got stuck up in this body. Is it? Asat, Achit and Niranand. Like that. So this is a great suffering for the soul. So this body is given to us so that we can revive the relationship. So human form of life is meant for that. Because our original relationship exists with Krishna. All the other relationships which we have in this world, they came afterwards. And they cannot stay permanently. It's just not possible. Like that. By the very nature of the material world, nothing stays. So that is why, when I was discussing this point yesterday, how the pure devotees, they have so much affection for the Lord. Why? Why they have so much affection for the Lord? Why we do not have affection for the Lord? Because we have lost that relationship, the pure Yeah, devotion. we have lost that relationship, yeah. We did not give it time, and because of illusion, three modes of material nature, we are covered and How pure devotees have so much affection for Krishna? Did they hear about sincerely? the The hearing? they are practicing the They have tasted higher taste. That is Lord. They have reciprocal with the Lord. Yeah, they have experienced Krishna connection. They have experienced Krishna's connection. Prabhupada writes in the purport, contacting Krishna, right? Directly or indirectly. Because they have contacted Krishna, they have experienced that higher taste. Like that. So, they have experienced Krishna. And one who has experienced Krishna, he cannot give up. In the next slok, it's going to come Satsangan Mukta Dussango Na Utsahate Buddha. The moment even one comes in good association, he starts hearing properly. Sakrat Akarnya Rochanam. One who starts hearing properly cannot give up hearing about the Lord. Then what to speak of Pandavas? Darshan, Sparsha, Samlapa, Shayana, Asana, Bhojane. They were seeing Krishna, they were with Krishna, they were talking to Krishna. Like that. How can they tolerate separation from Krishna? It's not possible. One who has experienced Krishna, he cannot tolerate separation from Krishna. इस संसार के जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति संसार में अपूर्ण है. इस संसार के अपूर्ण लोगों में इतनी आसक्ति हो जाती है. नहीं, उसमें इतने दोष हैं, संसार दोषों से भरा हुआ है और हर व्यक्ति में दोष है. उसमें इतनी आसक्ति हो जाती है
तो जो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है उनका किसी का संग हो गया, उनका दर्शन हो गया। यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी ऐश्वर्य किसी में पूर्ण नहीं है। ज्ञान भी टूटा फूटा है, हमारा विज्ञान भी टूटा फूटा है, और कोई भगवान जैसा कोई सुंदर है नहीं। भगवान 125 साल थे, इवन जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे, भगवान के बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, लेकिन भगवान 16 ही साल के, उतने स्मार्ट है। एवर इंक्रीजिंग ब्यूटी तथैव चान्या नरलोक वीरा या आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रम पिबन्ते नयनाभिरामा पार्थस्तपूता पद्मापुरस्य। सो ब्यूटीफुल वाज लॉर्ड दैट वो फाइट ही नहीं कर पा रहे थे लोग। तथैव चान्या नरलोक वीरा, वो युद्ध करने आए थे, लेकिन अर्जुन पे बाण चलाना चाहता तो कोई उससे पहले सारथी को देख लेता था, सारथी को देखा वो क्लीन बोर्ड। वहीं इतना सौंदर्य भगवान का, तो आप सोचिए भगवान से किसी का कांटेक्ट होगा तो कैसे सहन करेगा। हाँ। और जिसके हृदय में इतनी करुणा हो, इतनी दया हो, जैसे बता रहा था, हम जैसे जीवों के साथ भगवान कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कितना बड़ा चीज। इतना टॉलरेंस किसी में होगा। हम लोगों के साथ भगवान कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो contacting Krishna. So directly or indirectly Prabhupada says if we contact Krishna, then life will change. So this was the point I was trying to discuss yesterday. How to contact Krishna like that. Because if we don't come in touch with Krishna, then the life will go on. And we don't experience the higher taste. We don't experience the higher taste, there is no impetus to give us lower taste. And still life remains that. Like that. So, what are the, how do we analyze our life? Why we are not able to maintain the, why we are not able to experience the higher taste in Krishna consciousness? So, give your own answer, not general answer. Why I am not able to experience higher taste, not others. Others might be experienced. I have to think why I am not able to experience higher taste. Probably because I am not able to concentrate completely on the Krishna mantra, 100%. Okay, I am not, because I am not able to 100% focus on chanting Hare Krishna Mahamantra. Very good reason. Because I am not able to connect with the holy name. It is one of the very important reason we remain untouched by Krishna. We have to remain untouched by Maya, but we remain untouched by Krishna. Because we don't value the holy name. Bhakti Vasudeva Maharaj says chanting, when we are chanting, it's like honeymoon with Krishna. It's just one thing like that. Chanting is a very, very important thing. We don't value the holy name. Holy name, we take it little casually. We sleep, we don't get up like that. And when we get to know also, the best, Radhanath Maharaj says in his lecture that the best of us, our essence is our consciousness. And whole consciousness has to be put when we are chanting the holy name. It's like the whole energy has to be put while chanting the holy name. But we are not able to do that. Okay, what is your individual thought? Why we are not able to experience higher taste? Because we normally say that we are soul, not the body. Okay. But we believe that, but still we have believed that we are body. Still we believe we are body. इसी गीता में कहा है कि सोल है, बॉडी है, मतलब लेकिन आज मतलब उसमें बॉडी ही बेसिक मतलब लेके चलते हैं इसलिए, तो उसके अराउंड ही वर्क करते हैं इसलिए. So basically, we have not realized we have the soul, and we have not realized we have the soul, and also another thing is
we are much acting on the bodily platform. So, what is the way how one grows in his realization? How one grows in his realization? Okay. Okay, it's on Zoom only. Huh? How we can grow from bodily realization to soul realization? By constantly realizing that we are going to die. By constantly? Realizing that we are going to die someday. But how we will constantly realize? No, that is not the process. मात्र स्पर्शास्तु Process is we have to first tolerate the bodily needs. Krishna says in Bhagavad Gita. So this is the second reason why we are not experiencing higher taste in bhakti. Why we are not experiencing? Because we are too much focused on gratifying the body. Not just addressing the needs of body. We are into gratifying the body. Right? Krishna says in Bhagavad Gita, Dehinosmin yatha dehe kaumaryovanam jara tatha dehantara prapti dhiras tattrinamuyati. This is theory. What is theory? I am not body, I am soul. Now, after theory comes procedure. What is procedure? Matra sparshastu kaunteya shitosha sukha dukkhada agam apayino nitya tam sthitishvasa bharata. This is procedure. Your procedure is this. What is the procedure? We should be willing to tolerate the bodily needs to focus on duty. If you see 2.14 purport, Prabhupada is giving two examples. One example is in the winter. A spiritual practitioner, even in winter, he will get up early and take bath. And Prabhupada is also not about writing out hot water. He said even if winter is there and there's cold water. Why? Because it's a duty. And in summer, the housewife will cook. So the principle of 2.14 is to come out of bodily consciousness. We have to come to a platform of duty. We have to give up the mental platform. I like, I dislike. I am feeling like, I am not feeling like. Then one cannot practice. That is the procedure given to come to soul platform gradually. Spiritual duty should not be neglected. Oh, today I am feeling little tired. So let's skip Mangala. Oh, today it is it is fog outside. Let's take a little more rest. So, if one has to come from above, from bodily platform, one has to fix something, some regulation one has to fix, and inconveniences one has to tolerate. Some bodily inconveniences. Sometimes there is fasting till noon for the acharyas, like that. So the Ekadashi, no grains are allowed, like that. And sometimes we are there with the devotees. Some lectures are there, some reading sessions, hearing sessions, that also we have to tolerate. Why? Because mind doesn't allow us. Mind disturbs us. Like that. So when we tolerate and focus, then gradually we rise. When we tolerate 2 hours chanting, now we have to be in temple hall, we have to be with devotees. Mind gives so many reasons. You just go out of here, you just caught up here. थोड़ा बाहर, इसलिए शुरू में बच्चे पूछते हैं, यहाँ स्टूडेंट आते हैं तो यहाँ में थोड़ा डाउन हो जाता है चैंटिंग, बालकनी में कर लूँ क्या घूम के? वो कौन बोल रहा है? माया देवी साक्षात इसके घर में। तो छत पे जाके घूम के कर लूँ क्या चैंटिंग? ये so we have to tolerate, we have to focus on the duty. Like the student is there, they will focus on their duty of study. Services are there, we have to focus like that. So when we tolerate the pains which are there, which are coming in the services and sadhana, daily we have to read Prabhupada book. So हमारा तो habit है नहीं, तो शाम को देखते हैं तो रोज रहेगा तो इसलिए वो अभी इतने तरह के साधना कार्ड लॉन्च हो गए ISKCON में। लेकिन साधकों को साधना आसान नहीं है। इतने तरह के, अगर मैं रिसेंटली एक लॉन्च किया है, वो लाल कलर से भरा हुआ है, लाल पैशन का कलर है।
So we have to understand that daily reading, hearing, mind will give so many excuses. Oh, sometimes we are tired, sometimes if we give priority, we can do it. So this is the second thing. If we tolerate the inconveniences, the pains, the challenges, and along with all that, we do our duty. So, currently I am talking about one duty, which is our most important duty. As a sadhaka, our duty is to practice our spiritual life properly. Our reading, hearing, chanting. And whatever inconveniences come, I just tolerate. Sometimes when I am reading, I am just able to absorb. Sometimes I am reading, nothing is going inside much. And sometimes the health may not be so good, so I may not be so much absorbed. But still, you do it. Do the activity, don't leave it. Like that. Do the activity. So duty is very important. This duty part. And tolerating the inconveniences for duty. We have to keep little, at least in Mangal Aarti time, morning program time, mobile should be switch off. कहाँ गया वो डिवोटी तो इमरजेंसी कॉल लेके आया था मेरे लिए गायब हो गई थी okay it's not good so at least and before sleeping at least 1 hour before sleeping आपने वो पहले पंचतंत्र में वो स्टोरी थी सुना है ना आसमान गिर रहा है सुना है ना वो स्टोरी थी पंचतंत्र में आसमान गिर रहा है नहीं सुना कौन तो जंगल में कोई जानवर था क्या खरगोश था क्या बोलता है वो बोलता है कि पेड़ के नीचे रहता है लेकिन नारियल गिरता है हाँ तो वो भागने लगता है तो जंगल में चिल्लाता है कि आसमान गिरा आसमान ओके विपिन गुरु ने पढ़ा स्टोरी तो वो एक स्टोरी थी मैंने पढ़ी थी भूलिया में पंचतंत्र में तो एक खरगोश रहता है पेड़ के नीचे नारियल गिरता है तो वो भागने लगा बोला आसमान गिर रहा है सब लोग भागने लगते हैं तो सोने के 1 घंटे पहले अगर हम मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे या फ्लाइट मोड आसमान नहीं गिरेगा आसमान नहीं गिरेगा so we have to tolerate this if we want to focus some adjustments has to be made in life or any other reason why we are not experiencing higher test We are not practically applying the things what we hear from our spiritual master. yeah third thing is we don't have desire for application when we read and hear we don't have desire for application or we fear application generally in Kali Yuga there is fear of application like that तो क्या होता है कि जो एक्टिविटी है स्पेशली जो हियरिंग रीडिंग का एक्टिविटी है when we don't do it properly when we don't contemplate when we don't revise when we don't reflect and then we have no desire to apply because only when you deeply think about something when you think about something when you are absorbed absorption का नेचर कैसा है ना वो स्प्रेड होता है वो रुकता नहीं है वहाँ पे absorption का नेचर है जैसे मूवी देखने कोई जा रहा है तो मूवी देखने जा रहा है सारी लाइट्स बंद हैं देखा है आपने पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है थिएटर के अंदर कोई शोर नहीं कुछ नहीं एग्जैक्टली पूरा फोकस वहीं रहता है तो उसके बाद वो व्यक्ति जब मूवी से बाहर निकलता है तो फिजिकली बाहर आ गया है लेकिन मूवी चलती रहती है उसके माइंड में करेक्ट ये एब्जॉर्प्शन का नेचर है कोई भी चीज अंदर जाएगी ना तो वो स्प्रेड होगी ये एब्जॉर्प्शन का नेचर है तो रीडिंग हियरिंग में हमारा क्या एब्जॉर्प्शन होता है अभी हमने देख ही लिया अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में तो ये हमको सोचना चाहिए कि कैसे मैं रीडिंग हियरिंग कर रहा हूँ See, but Shivaram Maharaj very strongly speaks about this word automatically. Automatically means when you do everything properly, then bhakti automatically elevates you. But prerequisite क्या है when you do everything properly, like that. But if we don't do these things properly, we will not be able to experience the potency of it.
क्योंकि रीडिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, उसके बाद हमने तो रीडिंग हियरिंग में सबसे बड़े ब्लॉक्स क्या है रीडिंग हियरिंग की क्वालिटी में? क्या ब्लॉक है क्वालिटी में? मोबाइल Distractions. नॉट प्लान concentration. हाँ, तो पहला जैसे मैं पहले बताया था 4 चीजें रहती हैं रेगुलरली। ये पहला ब्रेक है, ब्लॉक है। For anything we do, first we have to do it regularly. Anything we want to make it habit, we want to make it a part of our life. अगर भक्ति को we have to make it a part of our life. हाँ, कि part of life means we cannot live without it. So first we have to regularly we have to do it. And then we have to do it properly. The second thing. Properly means when we do sadhana, there should be a proper place. And we should see that we are fresh. We should try. अगर बहुत extreme है, we are very tired, the things have been, somehow we could not get time during the day. Then even though we are tired, we should still do it. Even though nothing is going inside, still we should do it to maintain consistency. But in general ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोज उसी समय पे पढ़ रहे हैं जब खत्म हो गए। जैसे एक पर्सन से पूछे ना वो पढ़ते कि नहीं आप गीता, अरे सोने के पहले वही रोज गीता क्योंकि गीता जैसे ही मैं खोलता हूँ मुझे नींद आ जाती है। तो ऐसा नहीं होना कि वो टाइम ही वो फिक्स किया है हमने, हाँ, कि जब बिल्कुल लीस्ट एनर्जी, that should not be the case. So that is called as properly. There should be proper place, and we should be properly consciousness should be available to receive. That is why first half of the day is very good for spiritual things. हाँ? And third is sufficiently. Sufficiently we should. कभी इमरजेंसी आ गया, कुछ आ गया, बोला कि एटलीस्ट हाफ एन आवर इज नॉट मच, एटलीस्ट हाफ एन आवर वी ट्राई टू डू sufficiently. So when regularly, properly and sufficiently this thing is done, and fourth is prayerfully. Then we can see the effect. Why prayerfully, regularly, properly and sufficiently are the parameters required in material field also. आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, ये 3 होने चाहिए तभी उसका रिजल्ट आएगा ढंग से। लेकिन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में और स्पिरिचुअल टेक्स्ट में जो हम शुरू में प्रेयर्स करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेयरफुली व्हाई? बिकॉज ओनली बाय द मर्सी वी अंडरस्टैंड। तो जनरली वो प्रेयर्स हम स्किप कर देते हैं क्योंकि सेल्फ एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहता है। देखते हैं ना जनरली जैसे प्रेयर करते हैं ज्ञाना तो उसमें कंसंट्रेशन कम होता है क्योंकि उसमें सारे आचार्यों का नाम आ रहा है ना, और वो ग्रेट सोल्स में तो ऑब्जर्वेशन है नहीं हमारा ग्रेट सोल में ऑब्जर्वेशन नहीं है ना ये। तो प्रेयरफुली भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो एटलीस्ट अभी आप लोगों को कितने साल हो गए जप करते हुए? कौन कितने साल से जप कर रहे हैं? रवि प्रभु कितने साल से जब कर रहे हैं? 9 years से। सत्यम प्रभु प्रॉपर्ली 2 साल से कर रहे हैं। उससे पहले वो जिसके लिए मंदिर जाते थे, आ जाते थे। रेगुलर जब नहीं करते थे। ओके, 2 साल से। और परमेश्वर अच्युत प्रभु 8 साल से। विवेक प्रभु 1 और 2 में कितना अंतर होता है? पीरियड का ही अंतर है। विपिन प्रभु कितने साल से कर रहे हो? सत्य प्रकाश प्रभु 5 years. So we should reflect at this point of time that how years are passing. This is Maya.
Maya does not allow us to know how life passes by. Just see your parents, grandparents. Life just passes away. If you don't pause and reflect, life just passes away. It doesn't add any quality. To add quality in life, it needs initiative. It will not happen automatically. The good habits we make today, it will be our savior when we are leaving this body and at the time of crisis. If we don't make good habits like that, and there are mechanical things going on, mechanical things fail to offer shelter when you need. So when you are in crisis, they will leave you. Mechanical things, it has that nature. When we do things mechanically, then when you are in need, they leave you. That is the reason we repeatedly fall back to conditionings. That is the reason conditioning revisits. We repeatedly do mistakes. Why? Because when we are in need, we actually need the shelter of the spiritual things which we do, which we have done. But we never did it properly. तो जब प्रॉब्लम आता है वो छोड़ देते हैं हमको. And we remain the same. We keep committing the same things again and again. And years passes by like that. So that is why the earlier we understand this thing and we make the right habits, the better it is. Don't think with passage of time it will go. So some of you are chanting from 9 years, 5 years, 6 years, like that. Even after chanting 20 years, 25 years, 30 years, these things cannot go like that. Even we can see the quality of chanting itself, how the quality of chanting is growing or it's not growing, it's improving or not improving, like that. So that was the point. So when properly things are done, then there will be some desire, let me apply. Why? Because it's a nature of absorption, it goes to thought process. So when there is absorption, it will go to thought process and then you start thinking, how can I apply? How can I apply? जब तक वो नहीं होगा तो एप्लीकेशन का डिजायर बहुत ज़्यादा आएगा नहीं कि क्या अप्लाई करना है. अप्लाई करने के पहले पता होना चाहिए ना क्या अप्लाई करना है. तो उसके पहले जो पढ़ा सुना है उसको थोड़ा पता याद होना चाहिए, कुछ समझ में आना चाहिए कि उसमें क्या चल रहा है, कुछ थॉट प्रोसेस में घुसना चाहिए ना उसको. So this is another block. So scriptures, when we properly do absorb, there's desire to apply, and then it needs a faith to apply, because we are very fearful to apply. We think if we apply, what will happen? तो scripture में लिखा है भाई, परीक्षित महाराज के लिए तो भगवान आ गए थे, मेरे लिए तो मुश्किल लग रहा है. So Krishna is the same personality, still available and accessible for everyone, like that. And Krishna is reciprocating with all of us, and that's how we are going on, like that. Maharaj says in one lecture, we will fall 1,000 times in a day if Krishna will not protect us. We are able to go on with bhakti because of this. So we have to think about this aspect, like that. And yes, anybody else want to share why we are not getting taste? Anybody, any other we can do? Yes, Ajay bro. Due to lack of consistency in our spiritual activities. Lack of consistency in spiritual cover हो गया. Yes. Offenses towards. Offenses, yes. Offenses also one major reason. Offenses. One of the most important thing we have to be careful while after coming in association of devotees is offenses. One of the most important. Because somehow it is so displeasing to Krishna and Radharani. When we offend devotees, when we take them cheaply, when we criticize them, somehow Krishna keeps aside all rules, regulation, logic, everything. Everything is just blocked. So that has to be also very, very important thing. And offenses takes away and taste. Prabhu, we have not surrendered to Krishna.
Yeah, that is true. The final thing that is. Lower taste. Yes, Vipin bro. Enjoying the senses. Enjoying the senses. We have to accept that we are enjoying the senses. That is why Krishna consciousness appears dull to us. We are enjoying all the senses. If we have not misused our eyes, when you take darshan of Krishna, Krishna will be very attractive. If you have not misused the eyes. We take darshan, we cannot take darshan for a long time. Why? Because we have misused these eyes. So because we have misused these eyes, Krishna, who is most attractive, his attractiveness is covered. Because of that. So because we are enjoying the senses, because we are hearing the mundane things, when we are hearing Krishna Katha, it appears dull. Like that. And same with rest of the senses also. Same with rest of the senses. We have to stop sense gratification. If somebody is eating unoffered food, that which is not offered, he can give all kind of justification. Like that. He cannot understand. Mahaprasade, Govinde, Nam, Brahmani, Vaishnavi, these are 5 things in the first line of Mahaprasad mantra. Mahaprasade, Govinde, Nam, Brahmani, Vaishnavi, Swarpa Punyam, Pratam Rajan, Vishwaso Naiva Jayate. One who has less pious credit, he cannot develop faith in these 5 potent things. Mahaprasad, Govind, Krishna, Nam, holy name, Brahmani and Vaishnavas. He cannot have faith. Like that. So because we are enjoying the senses like that. At the same time we want to enjoy in Krishna consciousness. It cannot go like that. So that is also one of the reasons that we are not experiencing the. So at least we should reflect in our life and we should write down these reasons like that. Because the cure begins with diagnosis. If we do not diagnose what is the problem, then there will be a lot of issues. So sense gratification affect 4 phases. Once I spoke about it. Sense gratification affect 4 phases. Like that. So, समझ में नहीं आया 4 फेल्स क्या? तो क्या होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन कोई भी करते हैं तो कॉमन बताता हूँ जो काफी रिलेटेबल रहता है हमारा साथ बोल रहे हैं जैसे आपको पता चल गया आश्रम में पता चल गया भाई आज फीस्ट बनने वाला है मेगा फीस्ट है आज और वो व्यक्ति भागवतम में बैठा है ठीक है तो आइडियली तो उसका चैंटिंग के टाइम से ही इफेक्ट होने लगेगा उसको पता मॉर्निंग में अनाउंसमेंट होता है ना तुलसी आरती का अनाउंसमेंट होता है तो चैंटिंग ही उसका इफेक्ट हो जाएगा पहला तो इंजॉइंग थॉट से क्योंकि इंजॉयमेंट का थॉट हो गया तो होली नेम चैंट करना मुश्किल है क्योंकि उसमें तुम सेवा मांग रहे हैं ना ये उसके बाद वो भागवतम में बैठा है तो भागवतम में वो सोच रहे कब खत्म हो गए भागवतम में भी अब्जॉर्प्शन उसका अफेक्ट हो गया तीसरा फिर अब जो प्रसाद लेने जाएगा अब वो प्रसाद को प्रसाद की तरह नहीं ले सकता इंजॉय मेंटालिटी आ गई ना तो प्रसादम प्रेयर नहीं कर पाएगा ढंग से प्रसादम प्रेयर पूरा करना मतलब वो भी एक तपस्या है ना प्रसाद का प्लेट सामने आ गया पूरा प्रेयर करना है महाप्रसाद है उसमें भी कोई डिवोटी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बुला देते हैं तो उसको तो लोग देखने लगते हैं अरे भाई क्या कर रहा है कीर्तन करवा रहा है तो प्रसाद के बाद नो ब्रेक्स नो टाइम गैप शुड बी देयर तो प्रसाद को प्रसाद की तरह ग्रहण नहीं कर पाएगा चौथा ओवर ईटिंग करेगा चौथा फेज एंजॉयिंग मेंटालिटी आ गई ना ओवर ईटिंग ठीक है अब वो ओवर ईटिंग करेगा तो उसके बाद वाला जो फेज है
प्रसाद के बाद वाला, तो ओवर ईटिंग का भाई है ओवर स्लीपिंग। ओवर ईटिंग के बाद आदमी कुछ कर सकता है, कहीं एब्जॉर्ब कर सकता है। ओवर ईटिंग के बाद वो भगवान का दर्शन भी नहीं ढंग से ले सकता है, वो पढ़ भी नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उसके बाद वाला फेज भी अफेक्ट हुआ। तो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसके पहले वाला फेज अफेक्ट किया उसने। सेंस ग्रेटिफिकेशन जब कर रहा है वो फेज अफेक्ट हुआ। सेंस ग्रेटिफिकेशन के बाद वाला फेज अफेक्ट हुआ ओवर ईटिंग का। और चौथा क्या है, वो जो इम्प्रेशन क्रिएट करता है, वो जो इम्प्रेशन, जैसे हम लोग कभी बहुत स्पाइसी चीज खाते हैं ना, ऑयली चीज या कुछ भी, हाँ बताइए, पर से कोई उदाहरण कीजिए। जैसे कुछ बहुत है, हाँ पनीर टिक्का, और उसका फिर क्या होता है ना, ऑयल का कुछ ड्रॉप सपोज आपके कपड़े पे गिर गया, वाइट धोती पे गिर गया, हाँ, तो वो निकालने में बहुत मेहनत लगती है, निकालने में बहुत मेहनत लगती है। इसी तरह व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन कर तो लेता है किसी भी सेंसेस के द्वारा, लेकिन उससे जो इंप्रेशन क्रिएट होते हैं ना, उसको निकालने में उसकी हालत खराब हो जाती है, उसको निकालने में। So this is we have to understand, we should try to live a regulated life. We should try to live a regulated life as much as possible and not unnecessary indulge in sense gratification of any of the senses. This is a principle we have to understand. Beginning with the tongue. Beginning with the tongue. Like that. I am not telling we should starve. We should be regulated. We should be regulating. See, we have to see we are living for a goal. If we forget the goal, then it becomes a normal life. जिमनास्ट वाला जो होता है ना, जिम्नास्टिक्स में जो पार्टिसिपेट कर, जिमनास्ट होते हैं जो, हाँ, तो वो लोग भी ऑयली और ये सब नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वैसा बॉडी चाहिए, वेरी फ्लेक्सिबल। तो वो लोग इतना तपस्या करते हैं। कोई सिंगर वगैरह रहते हैं तो वो लोग आइसक्रीम और ये सब नहीं खाते, आइसक्रीम ऑयली टू प्रोटेक्ट देयर थ्रोट, लाइक दैट। एनी फील्ड ऑफ लाइफ, टू रिफाइन इट you need tapasya. Not extreme, at least regulation. Bhakti doesn't recommend very extreme tapasya. We are not talking, at least good regulation. Like that. Sleeping, eating. So we are enjoying senses. That is also one of the reasons we are not experiencing the taste in Krishna consciousness. Yes, Rahul bro? Yes, please. Yes. लेजीनेस टुवर्ड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज रहती है, और क्या रेगुलर कैंप अटेंड ना करने की वजह से, और क्या बोलते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है हायर टेस्ट, उनका रेगुलर एसोसिएशन नहीं करना, मीटिंग से जैसे रेगुलर मीटिंग नहीं करना प्रभात जी की, हमारा सिलेक्शन नहीं सुनना है, अपने काउंसलिंग लेक्चर नहीं सुनना है, तो इन सब वजह से हायर टेस्ट नहीं करना। Laziness in spiritual life. When this Kali-yuga symptoms are told, manda sumanda matyo manda bhagya upadrita, in that this man which is told, which is lazy, the person is lazy for spiritual life. So it is explained by Acharya where he is lazy and lazy or dull. Two things are told. So lazy means he is lazy for spiritual activity. Prabhupada says nobody is lazy, everybody is active somewhere. And dull means what? He is not clear about the goal of life. He does not know what is the goal of life. That is a dullness. ऐसा नहीं है वो मोबाइल चला रहा है, 10 चीजें आती हैं उसको, संसार की काफी सारी चीजें आती हैं. He's not dull. He's dull about the goal of life. Why this human form of life is given to us? Kali-yuga people are dull in that. Correct? आप किससे बात करो, अरे मृत्यु आने वाली है, ये आने वाली है, आपको तुरंत साइड कर दिया जाएगा. वो टॉक ज्यादा करना नहीं चाहते लोग, ज्यादा बात नहीं करना चाहते. That is why they are called as so this laziness is there when we are lazy towards the spiritual activity. We are not willing to take initiative for spiritual activities like that. So great nectar is awaiting for all of us in spiritual life if we are willing to take the pains. Great nectar is awaiting, like churning of ocean. Eventually the nectar came. Very great nectar is awaiting those who are willing to take the pains. That is spiritual life.
like that. It is told if we understand that how important it is to do. Yes. प्रभु जी जैसे हम प्रोसेस करते हैं या तो हमको मैक्सिमम कोई टेस्ट मिल रहा है भक्ति में तो प्रभु जी जरूरी नहीं है कि वो असली टेस्ट हो मतलब हमको लग रहा है कि वो टेस्ट है Yeah, so that is also taste. It's not that. See, Jayadatta Swami Maharaj says devotees in between keep touches ecstasy. जैसे जंप करते हैं ना हम लोग तो कुछ फ्लोर ऊपर टच कर देते हैं और डिवोटी का लाइफ भी ऐसा इन बिटवीन ही कीप्स टचिंग एक्सटेसी कभी कैंप में आए या कभी बहुत अच्छे से रीडिंग हियरिंग हो गया एब्जॉर्प्शन के साथ तो हम एक्सटेसी को टच करते हैं हाँ तो वो होता है वो तो स्पिरिचुअल लाइफ का नेचर ही है बट फॉर अ स्टेडी हायर टेस्ट वी हैव टू पे द प्राइस वी डोंट डू इट ऑल द टाइम दैट्स द प्रॉब्लम like that. The more frequent those moments of higher taste are, the more better it is. Like that. That is the point. देखो क्या है कोई भी चीज़ है ना वो जितने अच्छे से की जाती है तो जैसे तुकाराम महाराज बोलते थे अगर आप हरिनाम का अच्छे से जप करेंगे सारे कर्म की ग्रंथियों को तोड़ देगा वो मराठी में मुझे मराठी वाला है उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे रूट्स होती हैं एक्टिव रूट्स होती हैं देखा है हाँ जैसे पीपल वगैरह की जो रूट्स रहती हैं पत्थर को भी तोड़ के निकल आती है देखा है आपने घर पर पत्थर को भी तोड़ के निकल आती है ऐसे हरिनाम अगर किया जाएगा अच्छे से तो सब कुछ कर देगा और तुकाराम महाराज बोलते हैं इन द एंड ऑफ लाइफ यू विल क्राई टीयर्स if holy name is not there in your mouth. तो हरिनाम के साथ हम लोग कैसा संबंध स्थापित करना चाहते हैं हमको सोचना होगा क्योंकि यही हमारा साथी है तो हम लोग उसके साथ कैसा संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो अगर शेल्टर लेंगे तो वो रहेगा जब हमको प्रॉब्लम होगा Many devotees we have to see how we are able to take shelter of these things. Actually, generally, whenever we feel down or we indulge in sense gratification, we face failure, generally we take material breaks. We give up, we give up reading, we give up hearing, we give up chanting. We are supposed to turn towards Krishna. All the situations in lives are organized so that we can turn towards Krishna. But the jiva repeatedly turns towards Maya. And as long as it turns towards Maya, repeatedly one has to take birth. Little free will is given to jiva. And jiva misuses that. Krishna has to create material world. For all of us. Krishna has to create material world. Again, material world is a chance to rightly utilize the free will. Not trying to enjoy the senses, but now try to serve Krishna. Like that. Unless we learn that, we have to keep coming back here. Like that. That is how the whole thing. We have to learn to turn to Krishna. That. So, that is why some practical things we have to see that the more sincere we become, the more Krishna enters into guiding the details in our life. Like राधानाथ महाराज से एक बार राधेश्यामपुर ने क्वेश्चन पूछा महाराज यू आर नॉट ऑलवेज एक्सेसिबल अभी सोचो राधेश्यामपुर ने पूछा प्रभु जी तो एक्सेसिबल है महाराज लेकिन बोला महाराज यू आर नॉट ऑलवेज तो हाउ टू अंडरस्टैंड आई एम फॉलोइंग व्हाट यू लाइक व्हाट यू मीन्स what I am following, is it in line with you or not, is it pleasing to you or not? Maharaj बोले if you follow the broad instructions very very sincerely, then for the other minute instructions Paramatma will guide you. Like that. He told Paramatma will guide you. And also Maharaj told you have your senior God brothers you can discuss and consent. Like that. So the point is, Krishna, and if we become focused in our spiritual practices, then we find how amazingly Krishna also starts entering and he starts guiding.
Dhruv Maharaj was serious about spiritual practice. This is also one point. He was very serious. When we come to spiritual life, we are not very serious about it. We think, okay, it's just also a part, we just started, it seems nice, Hare Krishna is a good, nice prasadam here, nice devotees here, and dancing is also there, kirtans are also there. At some point of time, we have to take it seriously. That this is the life. And we see these acharyas, how seriously they took, and all Srila Prabhupada disciples, how seriously they took. Then they could change the situation of the world. Like that. And they could serve others. So we don't take spiritual life very seriously. We take it as very entertaining. It's very jolly. That's good. Kevala Anand Kan. So when we take spiritual life seriously, Krishna starts entering into details. Dhruv Maharaj, Radhanath Maharaj says in the lecture, Dhruv Maharaj was in the wild forest. No human being to be seen there. How Narad Muni came there? Krishna arranged. One sincere person wants to practice spiritual life. One sincere soul. Krishna arranged Narad Muni to be right there. Just imagine. And all the details after that. Who is guiding? Narad Muni told, go to Madhuvan, make a deity, chant this mantra. After that, did Narad Muni told, okay, after first month you take berries, second month you take water, third month you take air, fourth month you stop breathing. Did he told that? Lord guides. Dev is serving Kardam Muni. ऐसे ही शादी हुआ, कर्दम मुनि समाधि में चले गए. अब चले गए तो समाधि में कैसे? कई हजारों साल तक समाधि में ही है. और देवती प्रिंसेस है, सर्व कर रही है. She would understand the moments of ये भी एक पॉइंट है. She would understand just by the bodily movements of Kardam Muni, she would understand what he needs. बोलने के बाद भी communication gap रह जाता है आजकल. How? Because she wants to serve Kardam Muni, Krishna is guiding. Rupa and Sanatan Goswami, they are there. Krishna is guiding them. Chaitanya Mahaprabhu guided how they can take up. The Pratapruddra Maharaj. So all sincere, so if we take spiritual life seriously, Krishna also starts guiding how we can take shelter. If we take spiritual life lightly, Maya also starts guiding. How you are already doing too much. Maharaj says even during the time of death, there will be two voices. In one ear, Krishna will speak. In another ear, Maya will speak. Like that. So there are many things in this which I want to share, but few things I will speak now in conclusion so that we can pick up something. First is, we study the life of great souls. Life of great souls is a life of absorption. It's not a very casual life. We have to understand. See the life of Jeev Goswami, Rup Goswami, Sanatan Goswami. It's a life of absorption. It's not a life of frivolity. It's not a life of whimsical life. So Parikshit Maharaj, when he was a boy, he was playing with Krishna dolls. Uddhav, when he was a boy, he was playing with Krishna dolls. No playing. Narad Muni comes in first canto of Srimad Bhagavatam. The four qualities of Narad Muni, right? Adante, Akrinanke, Alpabhashini, Anuvartini. He was not sporty, he was not playing sports. Adante, he was sense controlled. He was not speaking more than required. So when we study Bhagavatam, we have to see the life of great souls and see what qualities they are manifesting. And we should have a desire to have those qualities. Like that. So it's a life of great absorption, the life of all great souls. Like that. So in our life we have to think how that absorption can come. Like that. So in the Srimad Bhagavatam, first chapter, Prabhupada also write in first canto, first chapter, purport, some purport. First or I think third chapter.
first, second, some chapter purport. Prabhupada writes. What Prabhupada writes is, what is that shloka? Krishne swadham upagate dharma jnana divisa पुराण को धनुदिता कलो नष्टो दशामेशा पुराण को धनुदिता. This Wi-Fi doesn't work properly. Huh? Sometimes it Huh? technical glitch. क्या? कभी-कभी वो रुक जाता है. ये हमारी तरह है, हमारी भक्ति की तरह है. कृष्णा कनेक्शन है ना. हाँ? रुक जाता है. ये लगाने के बाद रुक जाता है. मोबाइल से अच्छा चलता है कि इससे अच्छा चलता है? मोबाइल से. हाँ? मोबाइल वाला नहीं रुकता कभी. नहीं रुकता. हाँ? मोबाइल से नहीं कभी नहीं, मोबाइल का जो कनेक्शन है ना, Recording in progress. Okay. So it comes in Srimad Bhagavatam that Krishna, when what was the shloka I was telling? Krishna swadham upagate dharma. When Krishna went to his own abode, dharma jnana divisa, kalau nashto dashamesha puranar ko dhunodita. Then a son of Srimad Bhagavatam arose like that. So Krishna appeared as Srimad Bhagavatam. And if we nicely take, if we are enthusiastic to serve Krishna and take shelter, Krishna will also appear in our consciousness. Like how Krishna came in the consciousness of Vasudev first. Then from the consciousness of Vasudev, from the mind of Vasudev to heart of Vasudev to womb of Devaki. So Krishna will come in our consciousness if we are enthusiastic to serve. So now some practical application things. I would like to speak. There are many details in it, but some practical application things. So till now, how many of you have ever done some inventory how the spiritual life is going? Like how last 1 month my spiritual life went, or how last 15 days. Some good inventory you have done closely. How was the chanting, reading, hearing? You have done? Yes. Anybody else? एक बार किया. हाँ? एक बार किया. कब था वो शुरू में? हाँ? अभी आपने बताया था तभी किया था. Okay. So this is the first step if we want to improve ourselves. This is the first step. If you want to go ahead, first step is you should know where you are. Then only you can go ahead. Like that. So being in India, we assume that already somehow it is in the psyche of Indians that somehow the spiritual things are not to be taken very seriously. So first thing is the inventory. We have to look. Bhakti Vinod Thakur says, every 15 days one should introspect. Acharyas are telling something, we have to understand. We should not take it lightly. Every 15 days we should take. Now one may think, अरे reading hearing के लिए time मिल नहीं रहा है, और mind बोलता है और introspection और करवा लो आप उसमें. एक तो reading hearing हो नहीं रही है, उसमें आप introspection और करवा लो. See, we have to introspect. भक्ति तीर्थ महाराज से क्वेश्चन पूछा था कि महाराज, how you are able to steadily progress and practice spiritual life year after year, so many changes, so many disturbances in the movement itself, so many problems like that, your own health issues. Do you not get disturbed? So Bhakti Tirth Swami Maharaj replied, yes, I do get disturbed. And then Maharaj told, every day is a challenge for me. But I am able to go on steadily, day by day, week by week, month by month, year after year, because I constantly do inventory.
monthly, yearly, decades. This is Maharaj answer, as it is I am telling. Maharaj answer. So inventory is an important aspect to reflect, but this is a sign of laziness. We don't want to reflect what is going on. मटेरियल चीज़ों में आदमी पूरी जान लगा देता है, वो ऑडिट में सबसे मुश्किल, वो अकाउंट में देखा है ना, ऑडिट ही रहता है, वो टेम्पल का दुखी हो जाते हैं उसमें लोग एकदम जो ऑडिट होता है वो पूरे बिल एक साल में जितना खर्चा हुआ आया गया सब एकदम spiritual audit. So this is the first step. What is the first step? Inventory. And Bhakti Vinod Thakur says we should do once in 15 days, like that. You should do, and what is your understanding, how you felt, how the reading went, hearing went, what lacked, what inspired, positively. Like that, some small report we should make, and if possible we can send. Because if you leave it to yourself, you will never do it. Like Pravesh who is sharing, he did it. Ekada Munaya. Once upon a time. But at least I am grateful to him. At least he is the one who did it. I have been telling many times. But others have not done it. So first we should do it and we should send to someone. Otherwise we will not be able to, because accountability is very important. So that is called as inventory. So today, after now, when you go back, have an inventory of your life from कितने साल से आप लोग जब कर रहे हैं, क्या रीडिंग का स्थिति है, क्या हियरिंग का स्थिति है. Second step after doing your inventory of where you are, and also having the desire that at least once in a 15 days we should do it. Second step is we should start feeling sadhana card. Mind का एक nature है क्या है? Anything which you cannot quantify, you can't understand. Don't. So India में क्या है? भाव की प्रधानता है. और भाव का देख लो, भाव की प्रधानता रहती है. तो वो भाव की बात करते हैं लोग. बट विधि में we have to quantify things. हम कर रहे हैं कि नहीं उसको कर, नहीं तो क्या है, तब तक आपको समझ, यही माइंड का सबसे बड़ा एक ट्रैप होता है. हम लोग भक्ति में सीरियस नहीं, हम माइंड कभी सीरियसली हमको लेना ही नहीं देता है. जैसे हम लोग जब वॉइस में थे तो हम लोग पढ़ाई करते थे, तो जब शुरू में लोग पूछते थे अच्छा आप कितने घंटे पढ़ते हैं, 7 घंटे पढ़ते हैं. अंदाजा है ना, तो अंदाजे से बात किया तो देखा नहीं कितने घंटे, 8 घंटे. तो फिर हमारे जो टीचर्स आते हैं, ठीक है आप स्टॉप वॉच लगा के पढ़ो. स्टॉप वॉच लगा के, कहीं बीच में उठते हो आप, कभी मोबाइल कुछ कॉल अटेंड करना होता है या कभी ब्रेक लेते हो, तो फिर वो स्टॉप वॉच बंद करो. तो हम बोले ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात. तो स्टॉप वॉच लगा के 4 घंटे में हालत हो जाती थी. 4 घंटे कंप्लीट कर रहे हैं. पता नहीं था कि हम लोग इतना ब्रेक लेते थे कि तो क्या होता है, ये रियलाइजेशन आता है जब साधना कार्ड एटलीस्ट भरने लगता. थोड़ा मोबाइल में स्टॉप वॉच लगाने का हैबिट रखो. स्टॉप वॉच लगा के हाँ देखो, अरे 20-25 मिनट मतलब आधा घंटा भी व्यक्ति अगर शास्त्र के संपर्क में अच्छे से आ जाता है, शास्त्र के श्रवण के, वो उसकी चेतना को प्रभावित करता है. वो प्रभावित करता है, दिव्य ध्वनि है ना. लेकिन क्या है, हम आधे घंटे भी ढंग से नहीं आते हैं अच्छे से. और किससे पूछो आपने कल कितना रीडिंग किया था, कितना रीडिंग किया था कल? Okay, so we have to quantify. क्वान्टिफाई करना इम्पोर्टेंट है. तो आप स्टॉप वॉच लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा. आप देखो 15 मिनट में भी कितना एनर्जी लगता है, आधे घंटे में कितना एनर्जी लगता है. तो क्या होता है, माइंड का नेचर कैसा है, टाइम होता है ये रिलेटिव काम करता है. समझ रहे हैं? रिलेटिव कैसे काम करता है, जैसे प्रसाद ले रहे हो, 1 घंटा बीत जाएगा पता नहीं चलेगा. प्रसाद ले रहे हैं और उसके बाद फिर डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे ही चला जाएगा. या लेक्चर के बीच में, 2 लेक्चरों के बीच में 1 घंटे का ब्रेक है, वो पता नहीं चलता है. और लेक्चर 1.5 घंटे का है
उसमें लगता है युग ही तुम युग बीते जा रहे हैं। तो वो रिलेटिव रहता है टाइम। हाँ, तो क्या होता है, माइंड को जिस चीज के लिए टेस्ट नहीं है वो बहुत लंबा टाइम जाता है। इसीलिए स्टॉप वॉच लगाना जरूरी है। आप स्टॉप वॉच लगा के डिसिप्लिन मेंटेन करो। तो जो साधना कार्ड हमको भरना चाहिए, दूसरा स्टेप। और तीसरा है, तो उसके लिए जो साधना भर रहे हैं हम लोग, वो एक डिसिप्लिन साधना होना चाहिए। एटलीस्ट स्टॉप वॉच लगा के आप उसको, तो एक रेगुलेशन हो जाएगा साधना का। 16 राउंड का तो रेगुलेशन है ही, कैसे भी हम लोग कर रहे हैं वो तो करना है तो कर रहे हैं। 16 राउंड में क्वालिटी नहीं आएगा जब तक क्वालिटी रीडिंग हियरिंग नहीं हो रहा है। उसमें एक रेगुलेशन आना चाहिए, क्या चलो आधे घंटे पढ़ना है, तो वो स्टॉप वॉच लगा के आप उसमें जब रेगुलेशन लाएंगे, अपने आप को थोड़ा पुश करेंगे, हाँ, तो वो आएगा। तो पहला स्टेप मैंने क्या बोला, इन्वेंट्री कहाँ हम हैं, और 15 दिन में उसको थोड़ा भक्ति विनोद ठाकुर के अकॉर्डिंग 15 दिन में, हाँ, किसी को 15 दिन कम लग रहा है तो 1 महीना, भक्ति विनोद ठाकुर ने 15 दिन बोला। दूसरा, साधना कार्ड भरिए, उसको भरने का हैबिट रखिए, कुछ हुआ नहीं हुआ पहले भरिए। तीसरा, जो साधना का रेगुलेशन है वो स्टॉप वॉच से रखिए, रीडिंग हियरिंग का रेगुलेशन, हाँ, स्टॉप वॉच लगा के थोड़ा, हाँ, उसको रखिए। यस यस। साधना कार्ड और इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस? नहीं, इन्वेंट्री मतलब क्या है, वो 15 दिन का है ओवरऑल। ओवरऑल एक्चुअली क्या होता है, हम सबका एक पैटर्न है और हम सबके कुछ ना कुछ स्क्रू ढीले हैं। वो सबका एक, सब व्यक्ति एक शटल बॉडी लेके आया है ना, तो किसी व्यक्ति की हैबिट रहती है प्रजल्पा बहुत करता है, हाँ, तो उसको अपनी कॉल समरी देखनी चाहिए। और मतलब ये एनालिसिस की बात है सारी, मतलब अलर्ट व्यक्ति, किसी व्यक्ति, सम पर्सन इज वेरी लूज विद टंग, so repeatedly he find that because of overeating is lot of time getting waste. Somebody is very loose in talking, the glib talker is just talking, so his lot of time gets wasted in talking, like that. Somebody is kind of unplanned, तो उसको सेकेंड हाफ में याद आता है कि प्लान, आधा दिन उसका ऐसे ही चला जाता है कई बार। तो क्या होता है, इन्वेंट्री में साधना के साथ ये भी है, रीडिंग हियरिंग का जो क्वालिटी है, तो रीडिंग हियरिंग उसने किया क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी कैसे रहा, और चौथा उसके कॉन्शियसनेस पे कैसा इफेक्ट हुआ, हाउ मच ही इज एबल टू, सो इट हैज मच टू डील विथ मोड्स व्हिच आई विल डिस्कस इन कमिंग सेशंस। So discipline, I told us, this is the third thing we can do, discipline. तो कौन सा 3 चीज बोला मैंने, याद रहेगा? विवेक प्रू बताओ। पहला है इन्वेंट्री, सेकंड है फिलिंग द साधना कार्ड, थर्ड है स्टॉप वॉच लगा के करनी साधना। ये 3, हाँ, ये 3 अगले कैंप में आएंगे तो ये 3, हाँ, लिख के रखो प्रवेश, याद दिलाना मुझे, ठीक है, हाँ, ये 3 चेक करना है, ये 3 हो रहा है कि नहीं डिसिप्लिन, हाँ, ये 3 जब होगा आपका रेगुलरली, ये 3 जब बेसिक रेगुलरली हो रहा है, रीडिंग हियरिंग चैंटिंग फिलिंग साधना कार्ड और वो, तो चौथा चीज आता है। चला गया, मोबाइल से लगाओ, मोबाइल से ये बीच में जा रहा है, क्या यूज है इसका, तो आता है चौथा चीज, मोबाइल का हुआ है, मेरा मोबाइल लिया, उसमें भी एक नेटवर्क है, क्या है इसका, पासवर्ड मांगे, क्या है इसका, हरीश, HA आगे कोई? हाँ, आपका भी वीक है,
क्या? असल में चीज़ में तो नेटवर्क तो पूरे आ रहे हैं 5G आ रहा है। Recording in progress. एंड्रॉइड वो वाला है ना, जियो। ओके, थैंक यू, इट्स डन। तो ये 3 पॉइंट के बाद था। पहला मैंने बताया इन्वेंट्री, दूसरा फिलिंग साधना कार्ड, चौथा डूइंग साधना विद स्टॉप वॉच। क्योंकि साधना मीन्स क्या है? जो मेजर की जा सके। उसके बाद है चौथा पॉइंट। हाँ, चौथा पॉइंट क्या है कि जो रीडिंग और हियरिंग है उसका क्वालिटी, ये चौथा पॉइंट है। रीडिंग और हियरिंग उसका क्वालिटी। तो रीडिंग हियरिंग के क्वालिटी के लिए सम टाइम वी शुड कीप असाइड। पहला चीज है वी डोंट ट्राई टू फिनिश थिंग्स। हमको ऐसा नहीं सोचना था प्रभुपाद जी ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, अभी तक मेरा ये बुक खत्म नहीं हुआ, कब मैं ये पढ़ूंगा, कब वो पढ़ूंगा, कब फिर भागवतम पढ़ूंगा, कब नहीं। ऐसा लॉलियम अच्छा है, लेकिन जो टाइम है उसमें आप अच्छे से पढ़िए। हाँ, प्रेयर्स ऑफर करके, और अगर आधा घंटा पढ़ रहे हैं, ये मिनिमम है, तो आधा घंटा पढ़ रहे हैं तो 25 मिनट बाद उठ जाइए। 25 मिनट बाद आगे हम बढ़िए, 25 मिनट बाद उसको रिवाइज कीजिए जो पहले आपने पढ़ा है। रिवाइज करने के लिए उसको हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। अब जो आपको समझ में आया अपने शब्दों में कुछ लिखिए। तो बच्चे है ना तब वो दिव्यम कोई कहा ही नहीं सकता। अपने शब्दों में लिखिए, क्योंकि कलयुग में जो डिवोशनल थॉट प्रोसेस है हमारे लिए नेचुरल नहीं है, तो हमारे विचार चेंज नहीं होंगे जब तक ऐसे रीडिंग हियरिंग नहीं करेंगे। अभी तक इससे पहले के जो 3 स्टेप हैं वो आपको मैकेनिकल स्टेज पे लेके ला के रखेंगे, आपका गाड़ी चलते रहेगा, ऐसा है जनरली। लेकिन इवेंचुअली क्राइसिस में अगर शेल्टर को एक्सपीरियंस करना है तो चौथा स्टेप होना चाहिए रीडिंग में और हियरिंग में। आइडियली तो है कि रीडिंग हियरिंग में से कोई एक चीज अगर थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। अगर रीडिंग सपोज 45 मिनट, 1 घंटा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। 45 मिनट रीडिंग कर लिया, 5 मिनट कुछ रिवाइज किया, फिर उसके बारे में कुछ कंटेम्पलेशन किया, और 30 मिनट हियरिंग। और दोनों में सिस्टम वही है। अगर 1 घंटा कर रहे हैं तो 10 मिनट पहले रुक जाइए, आधा घंटा कर रहे हैं तो 5 मिनट पहले रुक के रिवाइज रिफ्लेक्ट कीजिए। तो रिवाइज कीजिए, हाईलाइट कीजिए, और उसमें से कुछ लिखिए, जो भी आपको समझ में आया लिखिए। और आपका उसमें जो कंटेम्पलेशन है, और थ्योरी को एग्जाम्पल से कनेक्ट कीजिए। कंटेम्पलेशन जैसे आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, अभी ये द्वारकावासियों का अट्रैक्शन आपने पढ़ा कि द्वारकावासियों का कृष्ण के प्रति कितना आकर्षण है, वो सब आपने पढ़ा, ठीक है। तो अटैचमेंट, अट्रैक्शन फॉर कृष्णा, तो उसमें से कुछ भी जो मेजर पॉइंट आपको अच्छे लगे प्रभुपाद जी के परपोर्ट से आपने लिख लिए, और जो आपको समझ में आया वो आपने लिख लिया। अब उसको एग्जाम्पल से कनेक्ट कीजिए। हाउ मच शील्ड, नाउ उसके बाद उसको एग्जाम्पल से कनेक्ट कीजिए। मैं बता रहा था, कुछ भी पढ़िए तो उसमें से कुछ लिखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, जो आपको समझ में आता है वो अपने वर्ड्स में लिखिए, और उसको एग्जाम्पल से कनेक्ट कीजिए। एग्जाम्पल मतलब हाउ मच अट्रैक्शन शील प्रभुपाद हैड फॉर कृष्णा, हाउ मच अट्रैक्शन प्रभुपाद डिसाइपल्स हैड, हाउ मच अट्रैक्शन योर स्पिरिचुअल मास्टर हैड फॉर द लॉर्ड। गेटिंग द पॉइंट? तो जो थ्योरी है जब वो एग्जाम्पल से कनेक्ट होती है तो पर्सनलाइज हो जाती है। Values in themselves are not beautiful, but when they are connected to person, they become beautiful. ऐसा होता है। तो जब आप उसको पर्सन से कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए पर्सन के बारे में थोड़ा पढ़ा सुना होना चाहिए। जो भी आपने सुना है प्रभुपाद जी के बारे में, और प्रभुपाद जी हैं स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो उनसे कनेक्ट, उनका कैसे ऑब्जॉर्प्शन है कृष्णा में, ये जो भी प्रिंसिपल, मैंने ये एक प्रिंसिपल बताया, उनकी लाइफ में वो लोग ये कैसे कर रहे हैं, ऐसा। तो ये जब आप लिखना शुरू करेंगे धीरे धीरे, हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं अभी, तो इसके बाद एप्लीकेशन वाला पॉइंट आता है।
ये 4 चीजें नहीं होंगी तो एप्लीकेशन वाले पॉइंट पे ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा। ये 4th स्टेज है। जब हम लोग ऐसे ऐसे सुनेंगे और ऐसे पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए कि कुछ माइंड में रहना चाहिए, कुछ माइंड में गूंजता रहेगा। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो कुछ माइंड में गूंजता रहेगा ऐसा। और ये सब जो हम लोग कर रहे हैं इसके पीछे डिजायर होना चाहिए कि वी वांट टू सर्व, वी हैव टू प्रे टू लॉर्ड दैट वी वांट टू सर्व। तो जब आप इतना करेंगे, अभी जो आपने ऐसे पढ़ा सुना है, किसी व्यक्ति को शेयर भी कर सकते हैं इसका जो एसेंस है। तो as I have repeatedly told also previously, every devotee should have some very sincere spiritual relationships. Every one of them, with some equal, some senior. मतलब some good relationship where we are able to directly discuss the spiritual things. तो ऐसा आपने जो लिखा है उसको कहीं लिख के रखिए, लिखते रहिए। ठीक है। और फिर जो भी जिसी के साथ भी आपका ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, महीने में एक बार, इसका फ्रीक्वेंसी कम भी मत कीजिए, ज्यादा मत कीजिए, महीने में एक बार ट्राई कीजिए, महीने में एक बार। तो एक महीने में जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने इतना कंटेम्पलेशन वगैरह करके लिखा है, महीने में एक बार आप उससे शेयर कर सकते हैं, उसका और चर्निंग करके थोड़ा ऐसा। तो वो जो रिलेशनशिप है आपका वो बहुत डीप रिलेशनशिप हो जाएगा। क्यों डीप रिलेशनशिप हो जाएगा? क्योंकि ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप का स्वभाव है ऐसा है, ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप का नेचर है। वो रिलेशनशिप आपका बहुत डीप हो जाएगा, कृष्णा इज इन्वॉल्वड इन दैट ऐसा है। और उसके अलावा हर दिन आपने जो पढ़ा है, जो सुना है, उसमें जो एसेंस निकला है, तो अगर आप किसी भी डिवोटी से बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है अगर आप किसी डिवोटी को प्रीच कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा प्रिंसिपल है, हर दिन में एटलीस्ट एक डिवोटी, ज्यादा नहीं, एक डिवोटी से कुछ स्पिरिचुअल शेयरिंग कीजिए। एक डिवोटी से मटेरियल टॉक्स तो बहुत सारों के साथ हो ही रहा है, एक डिवोटी से। तो उस दिन आपने जो पढ़ा, उसमें जो रिफ्लेक्ट किया, उसका जो एसेंस है, तो जब ये एसेंस आप शेयर करेंगे किसी से, वो डिवोटी भी एनलाइटन हो जाएगा, और आपने उसको एनलाइटन किया, यू विल ऑल्सो गेट कृष्णास मर्सी। तो ये कौन सा स्टेप है? तो 4th स्टेप में मैंने क्या बोला? 4th स्टेप कौन सा था? रीडिंग में कंटेम्पलेशन करना, कंटेम्पलेशन करना है, लिखना है। कंटेम्पलेशन में क्या करना है? जो आपको टेक्स्ट समझ में आया और जो पर्सनालिटीज हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, प्रभुपाद प्रोमिनेंटली, ये लोग, ये अपनी लाइफ में इसको कैसे रिफ्लेक्ट, वो थोड़ा लिखने का थोड़ा मेहनत करना। और 5वां स्टेप है उसको शेयर करना 2 लेवल पे। डेली किसी एक डिवोटी को जिससे भी आप बात करते रहते हैं, अलग अलग लोगों को भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं पर्टिकुलर होना चाहिए। किसी से भी इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन के बीच में थोड़ा आपका एसेंस जो समझ में आया वो डाल। और 1-2 फ्रेंडशिप्स ऐसे रहना चाहिए जिसमें आप प्योरली कृष्णा कॉन्शियस, वो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप है, उसको डेवलप करने में आपको भी एनर्जी डालनी पड़ेगी। वो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप एक अलग टॉपिक है, लेटर समटाइम आई मे डिस्कस, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एटलीस्ट एक ऐसा कनेक्शन होना चाहिए, नहीं तो डिवोटीज से भी वही बात होती रहेगी, और कहाँ हो, कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे थे, प्रसाद खाया, क्या स्टेटस लगाया तुमने, ये such things will not help in the time of crisis. When you go down, these things will not help. Like that. तो ये कौन सा स्टेप है? 5th स्टेप। और 6th स्टेप है मोबाइल का रेगुलेशन।
इसको फर्स्ट भी बोल सकते हैं. If we are serious about Krishna consciousness, we have to accept this point. We have to regulate the use of mobile and internet. हमको याद है हम लोग जब कॉलेज में थे तो ऑर्कुट था ना, ऑर्कुट नाम था ये, इससे पहले ऑर्कुट के बाद क्या फेसबुक बाद में आया ना. ऑर्कुट वो नेटवर्किंग वो चालू हुआ था, हम लोग कॉलेज में थे और उसमें लगे लोग कनेक्ट करने एकदम से आया था ना. That was the first thing, you know. स्कूल के टाइम पे जो दोस्त थे पुराने सब, और उस समय नेट नहीं था तो हम लोग हॉस्टल्स में रहते थे तो लैंड काम करता था. लैंड होता है लोकल एरिया नेटवर्क. And still it was so polluting. And after that now the technology has advanced so much. So internet is very, very dangerous. So we should have a very regulated use like that. So regulated use of mobile. Mobile का एक टाइम होना चाहिए आइडियली, शुरू करने का बंद करने का. और भी बहुत डिटेल है लेकिन एटलीस्ट कि कब मोबाइल हम ऑन कर रहे हैं और साइलेंट और ऑन एक ही है, वो फ्लाइट मोड में और या तो ऑफ. तभी वो आप उससे डिस्कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि माइंड का बहुत सटल कनेक्शन रहता है. तो इसलिए आप देखेंगे अगर कोई मोबाइल ऑन करके भी सो रहा है ना, माइंड उसका डिस्टर्ब रहता है. आप मोबाइल बंद करके सोइए, माइंड डिस्कनेक्ट हो जाता है. तो मॉर्निंग की चीज़ें एटलीस्ट अगर आप कर सकते हैं तो 10 बजे अच्छा टाइम है ऑन करने का, और 11 बजे कर सकते हैं तो और अच्छा है. जैसा भी सिचुएशन है एटलीस्ट 9 बजे मॉर्निंग प्रोग्राम जब खत्म होता है, और सोने के 1 घंटे पहले बंद कर लीजिए, 1 घंटे पहले. तो ये आप कब कर पाएंगे? जब आपका एक प्लान रहेगा कि आपको जो भी व्हाट्सएप में कोई मैसेज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी है उसको कब रिप्लाई करना है. आइडियली ये भी एक, क्योंकि आपको कुछ रिप्लाई वगैरह बच गया तो फिर ऑन करना पड़ेगा ना वापस से. तो उसको प्लान कर सकते हैं कि कुछ मेजर चीज़ें हैं, अगर कुछ अर्जेंट नहीं है तो उसको एक साथ आपने रिप्लाई करते हैं. तो ये क्या है, ये 6 पॉइंट हैं. This is what I wanted to say. So please try it. I was thinking because we have been discussing these points many times, and I have also been telling. But this is to begin our Krishna consciousness. These points are meant to begin our Krishna consciousness. Like that. So we are in Krishna consciousness. All of you have spent somewhere 5 years, 6 years, 7 years, 8 years. Like that. So time goes very, very fast. And as we grow, it's not practically, we are not available all the time. It's become difficult to attend the camps, difficult to have all these things like that. And maintain very strong connection with at least 1 2 very good devotees. You should have a very good connection with at least 1 senior devotee and also at least with 1 equal devotee. Have very good connection like that. Because connection protects. If you are connected, then you will remain protected. Generally, because we go up and we also go down. When we go down like that, then if we are connected to someone and that connection is strong, that person will pull us up. If we are not connected, if no one is vouching for us, like that, then when we are down, then sometimes we go down. It's difficult to come up. So there should be some strong connection which we have to make. Then what happen? जैसे हम लोग कभी डाउन जाते हैं तो वो सीनियर हमको ऊपर खींचेगा, वो इक्वल हमको पूछेगा, जिससे ऐसा कनेक्शन है. कैसा कनेक्शन? जो 1 महीने में एक वाला है ना, उस कनेक्शन में बहुत डिटेल है. So that is what I want to tell. Okay, so one question is there from Umang group. There is proclivity for recreational activity like news, games, learning-based, fun TV shows. There is a big reason to pin us down. That is their approach through which systematically we overcome these proclivities. So these proclivities are the byproduct of inattentive sadhana. Actually, the result of sadhana is alertness.
You see, one day, the day you attentively chant and you read and hear very properly, what is the result? You are attentive, is it not? You are alert. What you are doing, why you are doing. And the moment the sadhana goes down, then we are not alert. And when we are not alert, then grey zone, these are the grey zone things. So we get into these grey zone activities like that. So that is why first thing to set right is this regular program of sadhana and along with accountability to someone like that. Because on our own, if we do, it's very difficult. Mind becomes steady by the steady instructions of superiors. It's a principle like that. If one has to train mind, mind has to be trained in submission. If you tell person that okay, you practice and become perfect, that's not the Vedic way. It never works that way. So if the sadhana is very good, then these proclivities. So in terms of recreation things, as you have mentioned, one has to be very sure that at least one should not cross the borderline. He should not cross Lakshman Rekha in recreation things. We should not watch movies or some other things. That is like breaking of four regulated principles. Like that. And other things are also not very good. Watching some cricket or those things are. But actually these are the results. When we feel down, mind is looking for pleasure. Then mind wants to see, like one of my friend, very good devotee. So he was champion in maths. And he would solve all the difficult questions of math. So he is a brahmachari. So he shared with me that recently, some few months back, suddenly somehow he got some book of maths. He said, I don't know how that book came. And he saw all those quizzes previously he would solve, and he got into solving the maths quizzes. He has that passion. Some 1 week went by in this. So you do, everybody, just see, everybody is kind of settled thing, and Maya can trap in so many different ways. Like that. So at least in our stage, what we understand is we focus on the positive and we pray to Krishna that it is possible to avoid the challenging situations in long run. And today or tomorrow we have to develop this habit. If it, whatever time, unless we develop this habit, we cannot drag on in spiritual way. Like that. We cannot drag on. And as we become seniors, you will find people will also not pull us up. Not easily, at least. Nobody will ask, are you chanting, are you reading, are you hearing? Unless you have some very close relation with some Vaishnava who is actually intervening in your life. Generally, as we become senior, people don't disturb much. And that is a bigger disturbance, that they don't disturb. Like, so, okay, thank you very much. So, this is my suggestion. And so, we will end here. Grantha Shyam Bhagavatam. Prasadam time, huh?